according to my viewpoint, at this point, I think law jo hota, it's a very sociological concept, right? Each and every law is based upon how the society would react to it. According to me, at this time, I do not think we as a country, we are ready to accept it in this sense. Agar law ban bhi jata hai, law ka implementation jo hota hai, that is a huge way difference between what जो whatever जो मतलब जो भी बनेगा अभी जो भी होता है, so अभी हड़बड़ी में आके already in a public motion and discussion करके, even if the legislature passes the laws, the implementation of it would create a lot of problems, which is why I do not think at this point any sort of amendment is required. The first and foremost, the only amendments which I feel is required is there should be a gender neutral stand to each and every cases in which जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे regarding molestation, regarding sexual violence and everything, since our society is progressing to variety of genders as well as their sexes and everything, what I feel is there should be complete gender neutral stand on everything, and from women the whole perspective should be shifted from defining them as persons and persons who would be liable and persons who would be liable and who are perpetrators of the same crime as well as a victim of the same crime. So this is the first and foremost amendment which I feel should be brought in this particular arena. But regarding criminalization of marital rape, that is something which I personally do not think should happen at this viewpoint. Maybe in the future, if we have already on the first place, if we already have gender neutral laws in the first place, tab jaake dekha ja sakta hai. But at this viewpoint, at this juncture, I do not think personally that this should happen. I do not think our society, and our society does not only contain people or elite people living in metropolitan cities and everything, more than 80% of people who do not have knowledge, or let alone anything, they do not have any update, any knowledge regarding these things. उसमें लॉ बना के भी कुछ नहीं होगा, अमेंडमेंट आके भी कुछ नहीं होगा. So this is what I feel. First and foremost, gender neutral law should be in place, post which after a viewpoint, seeing how the implementation of those laws are done, I feel that should be in place in the future. I just want to add Sanchari's point. बहुत अच्छा कहा आपने. मैं ये पॉइंट भूल गया था कि जहां पर नॉलेज ही नहीं है वहां अमेंडमेंट लाके क्या करोगे. Exactly, this is also what I feel. So एक और मेरा बहुत अच्छा proposition है इस टॉपिक. Yes, please go ahead. At this point, I feel like there are so many issues at hand, ठीक है, और हम लोग इसको पकड़ के चल रहे हैं. मतलब जैसे होता है ना कि there's a public discourse going on regarding this thing, and this would obviously lead to a law in the future and everything, and an amendment passed. But there are so many issues at hand. At this point, this is just a total deviation which is being created currently due to political, मतलब जो भी हो रहा है, so that अभी मेन इश्यूज एट हैंड वट एवर इट इज देयर, मतलब जिसके पास नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर हम लोग 80% गांव के उधर चले जाए, वहाँ पे इतने सारे इश्यूज है, वी आर नॉट सॉल्विंग देम, वी आर नॉट इवन ट्राइंग टू लुक एट देम, सो मेनी थिंग्स, बट वी आर करेंटली इन दिस डिस्कोर्स. अभी इज जस्ट अ डेविएशन बीइंग क्रिएटेड. दिस इज आल्सो व्हाट आई थिंक फ्रॉम a legislative political viewpoint. So that is what I really echo your thoughts. I'll just take 2 minutes. Please. So I just wanted to add Sanchari's opinion में कि इसके साथ एक proposition और है मेरा कि education बढ़ाइए आप. कितने स्कूलों में सेक्स एजुकेशन होती है? प्री मैरिटल सेक्स के बारे में ओपनली हम बात कर पाते हैं? क्या वो पोडियम है हमारे यहाँ? बिल्कुल नहीं है, 1% नहीं है. जब तक वो नहीं होगा तो आदमी इस कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ पाएगा. एक अननोन आदमी को आप कैसे समझा पाएंगे कि ये होता क्या है? बस फोर्स कंसेंट, फोर्स खत्म. इसके आगे क्या है, पीछे क्या है, क्यों है, बेसिस क्या है, क्यों हो रहा है ये? व्हाई डोंट वी टारगेट द रूट कॉज? दिस इज ऑल्सो प्रोपोजिशन कि हमें इस चीज के ऊपर भी प्रेस करना चाहिए कोर्ट के अंदर. वी शुड डायरेक्ट द एनजीओज इन दिस कि आप इस पे काम करो. गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स करने चाहिए इस चीज के लिए. आप हायरिंग करो उसके लिए एनजीओज, वो अवेयरनेस बढ़ाएं.
वोटर लिस्ट की अवेयरनेस तो बढ़ नहीं पा रही, गाँव में वोटर कार्ड तो बन नहीं पा रहे, वहां से पूरा एकदम तो there has to be a same, again I'm digressing from the topic, but आधार के केस में भी ऐसे ही हुआ। आधार आया आया आया, उसकी प्राइवेसी ये वो डेटा, भाई इंफ्रा नहीं है, कुछ नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है इंडिया के अंदर, कुछ नहीं है, आधार आ गया, ऑब्वियसली वो स्टक डाउन होना ही था। देयर इज अ लेकुना इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को वो इंफ्रा तैयार करना चाहिए था पहले। अगर वो इंफ्रा, भाई एसएसएन नंबर होता है यूएस में, सोशल सिक्योरिटी नंबर, कितनी बड़ी चीज होती है, उसके पैरेलल आप इंडिया में कुछ बना रहे हो। पॉपुलेशन का भी तो देखो, पॉपुलेशन की भी तो एक एक लिम पॉपुलेशन भी तो इफेक्ट करता है हर चीज को, चाहे वो लॉ हो चाहे वो कुछ भी चीज हो। 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ है, उसके अंदर आप ये ला रहे हो, ये नहीं पता कि किसका आधार बन रहा है, कहाँ का एड्रेस डाला है, क्या नहीं डाला, उसके ऊपर इतना क्योस हो गया उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली वो इट विल बी स्टक डाउन। इट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव, it was a great movement for digital India to come with Aadhaar, but it only lagged only because of base, infra नहीं था। सेम कोई भी हम बात करते हैं, I really admire Miss Johns, she's a wonderful advocate, कोई मतलब I really admire her in court, मतलब जब उनका मैटर होता है तो हम कोर्ट में घुस के उनके आर्गुमेंट सुनते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑल आर्गुमेंट्स आर रियली राइट, सबका व्यू पॉइंट अलग होता है। उनका व्यू पॉइंट उनके आर्गुमेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत सही है, बट हाउएवर इन माय ओपिनियन अगेन आई विल से देयर शुड बी अ गाइडलाइन फॉर एवरीथिंग, एज रिजी साहब आल्सो सेड कि इस पे हमें डिस्कशन करके स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके, सारी स्टेट्स का साथ में वो लेके ओपिनियंस लेके तब हमें कुछ ड्राफ्ट करना चाहिए जिससे एंटायर नेशन विल बी बेनिफिटेड। Right. Rather than stucking down, it will make a chaos in the entire country. ये फ्लड गेट खोल दोगे आप लिटिगेशन के, वो भी ऐसे पैरामीटर पे जो कंट्रोल ही नहीं होंगे, फिर आप बोलोगे अरे नहीं 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 हो गया, अब गाइडलाइन बनाओ। मतलब पहले फ्लड गेट खोल दो, पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो, और फिर प्रॉब्लम क्रिएट जो हो जाए उसका फिर सोल्यूशन ढूंढ दो। अरे यार पहले सोल्यूशन ढूंढ के रखो ना, पहले ही उस पर वर्किंग कर लो, तब प्रॉब्लम आएगी नहीं। यही हमारे यहाँ होता है, पहले हम प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो पहले गाइडलाइन बनाते हैं ना, ऑटोमेटिकली सिस्टमैटिकली होते जाएगा। अब विद विंक ऑफ द आई तो ये चीज जान नहीं सकती कि मैंने पलक झपकी और ये सब सही हो गया है। फिर इतने साल से पेट्रियार्कल सोसाइटी चलती आ रही है, बहुत सालों से, इसको चेंज करने में टाइम लगेगा। आज हम पैनल डिस्कशन में 2 मेल्स 2 फीमेल्स, सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट 2 मेल्स 2 फीमेल्स हैं। संचारी जी ये बोल रही हैं कि शी असेंट्स के ये चीज नहीं होनी चाहिए। इट इज अ बिग थिंग, बिकॉज उनको पता है उनके राइट्स क्या है और क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। ये चीज शायद मेरी मदर जब मैरिज हुई थी उनको पता ही नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। हमारी जनरेशन को पता है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो इससे भी ज्यादा इवॉल्व आएगी। तो इट विल टेक टाइम। मोरालिटी समय के साथ बदलती है, you cannot change it with a blink of an eye. You cannot just say कि आई ये कर दो सब सही हो जाएगा। उसके प्रोज एंड कॉन्स भी एसेस करना जरूरी है। Over to you, Farooq. Thank you, sir. Rizwan, you want to I add something? just wanted to, Yeah, please. I just wanted to, because my network was today somehow very bad, so I missed out on so many valuable things. Just wanted to add a few things. One, during this, when these arguments were on, government actually made a statement that we want to relook the law. So that was one very progressive thing which happened in court, although the courts cannot just sit down and wait, okay, you go and decide and deliberate. But yes, there's an acknowledgement by the government that we are willing to relook the laws, and which is very good, because deliberations, as I go back to where I started, deliberations are very important, and once we have a framework to address it, it would be very good.
The other issue with which Mr. Sanchari said, and then further elaborated by my brother Bharat, uh, was in respect of imparting knowledge, making awareness. I mean, very sorry to say, we are still telling people go to washroom, build washroom. So we are very far from the point where we'll able to explain consent and the implication, the nuances of consent. We still have to understand that, look, you should use a washroom that's hygienic. So we're very far from reaching to that idealistic society which we hope while being in our metropolitan cities, and not even the metropolitan cities, areas in the metropolitan life, which when my network was slightly down, I don't know what whether it was addressed. What Mr. Devanshu said while referring to US, that hate crimes and other things, then the society evolved. What we are at a stage where the courts are have to decide whether this is right or wrong. But the courts, I mean, in our set of framework, are not empowered, and rightly so. The legislature needs to come with a framework. So that those were interrelated things which I wanted to add. One more aspect, as it's, I believe we are at the concluding thing, and I believe somehow it also needs to be addressed. There are certain points which were argued in court. And I'll just read page 32 of the order of Justice Harishankar. What happens when it is not termed as rape in the present setup? The 32 says women raped by their husband do not, in her submission, get protection under law available to rape victims, such as Section 357A, which my friend Bharat initially quoted. So I'm just reproducing what are the sections which protection of which are not extended. So 357A, which provides for victim compensation, 357C, which provides for treatment for rape victims, 154 relating to providing information in cognizable cases, 164 which sets out the procedure for recording of statements by magistrate, 309 dealing with postponing of proceedings, 327 demeaning the criminal courts to an open court, and 164A which deals with medical examination of a rape victim of CRPC, 228A proscribing disclosure of identity of a victim of rape, and of 156 questions which may be lawfully asked in cross-examination of Evidence Act. So these are multiple set of protections to rape victims, the rights which are there, which when we do not treat it as the rape, those are not extended. So the deliberations and other things which legislature would go into the nuances, uh, these protections which are victim compensation, hiding identity, what questions are asked, and so many, so on and so forth. The judgments are both the judgments. They very give you an insight of the entire jurisprudence, and which very important to I mean, multiple reads of these would help us all in evolving to maybe recognize someday the offense, which our good term was coined by our brother, spousal sexual violence. So maybe something of that sort would evolve, and will be able to address this malice which is there, and I mean, that's what I think we are at conclusion, so I'd conclude with that.